जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सदैवाग्रे भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद के रामाचार्य वेदव्यास ठाकुर के प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के मथुरा वृंदावन धाम के नवदेव मायापुर धाम के जगन्नाथपुरी क्षेत्र के द्वारका धाम के गंगा मैया माई की भक्ति देवी की तुलसी देवी की स्वामी भक्त वृंद के हरिनाम संकीर्तन मार्ग के मंगल आरती के गौर प्रेमानंदे all glory to you and the Lord will be loved. Prabhupada ki jai.
विष्णुपाद की वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवते देवी तुलसी महारानी की जय। तुलसी कृष्ण प्रेयसी
महारानी के वृंदाय देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुवते बलदेव नमो नमः वृंदाय देव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुवते बलदेव नमो नमः वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ते बलदेवे सत्यवते नमो नमः बलदेवे तुलसी महारानी के हरि ओम जयनारायणमाचरं भवमाधवादिनिर्वाणं श्रेयाकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दामुदिवर्धनं रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मास्तपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं राम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन्ममाभि गौरैवमीदृशं ह्यगणनानुरागा ऋणारपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीनमानदेन कीर्तनीया सदा नदनं न जनं न सुन्दरीं कविता वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतुकी त्वयि हरिनन्दा तनुजा किङ्करं पतितं मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजासितधूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदारुद्धाय गिरा पुलकनिश्चितं वपु कदा तव नामाग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा भाविषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्दाविरयेण मे आश्लिष्य वा पादरतं विनस्तु मा अदर्शनमर्मातं करोतु वा यदा तथा वा विदधातो लम्पटो मत्प्राणानाथस्तु स एव न परः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण की श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। The following are the 10 offenses to be avoided by chanting the holy name of the Lord. The first offense to blossom the devotees who have dedicated the life for getting the holy name of the Lord. Second is to consider the names of the gods like Lord Brahma or Lord Shiva to be equal or independent of the name of this. Third offense is to disobey the orders of spiritual master and to customize the ordinary person. Fourth, to blaspheme the Vedic scriptures or scriptures in pursuance to the Vedic version. Fifth offense, to consider the goals of chanting Hare Krishna to be an imagination. Sixth offense is to use a mental interpretation to the meaning of the Lord. Seventh, to commit sinful activities on the strength of the holy name. Eighth offense is to consider chanting of the holy name as one of the auspicious ritualistic activities often in the Karnataka version of Vedas. Ninth offense, to instruct a faithless person about the glories of the holy name. 10th offense, not a complete faith in chanting the holy name of the Lord and to maintain material attachment even after understanding so many instructions on subject matter. It is also offensive inattentive chanting. Every devotee who claims to Vaishnava must guard against these offenses in order to create the desired success. Krishna Prema. Let us offer our humble obeisance to all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desired trees, who can fulfill all desires and full of compassion for the fallen conditioned souls. Vansha kalpatro vishya kripa sindhu bhyavacharana pavan Anant Koti Vaishnava ki Namacharya Shendas Thakur ki